Hello everyone, I am Neha Miglani. Today I am going to start the topic of law of demand. Law of demand is a part of the managerial economy as well as business economy. Managerial economy is a part of the unit 1 of a management subject, and it is also a part of the unit 3rd of the business economy subject. Before starting my topic, I just want to say that if you want most reliable data related to commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, and physical education, just call on Divagar Education Hub and get yourself enrolled in Divagar Education Hub. For any other detail, you can call on that number. Now let's start our topic. Demand means it states that other things being equal, the demand for the good extend with the increase in prices and contract with an decrease in prices. It means there are various factors that are affecting the demand, like income of the consumer, taste and expectations of the consumer, government policies, price of the related goods, and and expectations of the consumer. But we just neglect all these factors while deciding the demand. We just follow only the price of the demand of the product. If the price of the product is increases, then the demand will decreases, and if the price will decreases, then demand will increases. And all other factors should be ignored by the economics. This is called law of demand. In other words, there is an inverse relationship between the quantity demanded of the commodity and its prices. We just already discussed in previous lecture that there should be inverse relationship between the price of the commodity and the demand of the commodity. If prices increases, then demand decreases, and demand increases, then prices decreases. And the term other thing being constant, it is very important part of the law of the demand that other things should be constant. Constant means we should ignore all the effects of the other factors of the demand. Only we just consider the price of the product. So in short, law of demand says that we should neglect all other effects of the factors of the production which are discussed in the previous lectures, like taste and preferences of the consumer, price of the related goods, government policy, expectations, and etc. We just neglect all other factors. We just follow only the price of the commodity, and there should be inverse relationship between the price of the commodity and the demand of the goods. It means when prices increases, demand decreases. If prices decreases, then demand increases. This is called the inverse relationship between the price of the commodity and the income of the price of the commodity and the demand of the consumer. There is we just follow something in our previous slide, that is the ceteris paribus. Ceteris paribus, we just see in the previous slide, that is a ceteris paribus. So what is a ceteris paribus? It is a very important topic in the UGC net preparation. Ceteris paribus means other things unchanged or constant. It is called ceteris paribus. It means we just not follow all the effects of the other factors of the production, other factors of the demand. This is called ceteris paribus. Now come to the next, assumptions of law of demand. Every law should follow some assumptions or set rules for demand. First one is the taste and preference of the consumer remain constant. There should be no change in the taste and preference of the consumer. If the consumer is strictly follow one product, then he should follow that product at any cost. May the prices increases or decreases doesn't affect. Second, there is no change in the income of the consumer. Income of the consumer doesn't change. It means it should be constant. If the consumer is getting 10,000 per month every
year, then he should get 10,000, not more than or not less than. Next, price of the related goods doesn't change. Price of the other goods, maybe should be complementary good, maybe it is a substitute good. Price of all the related goods should not be changed. It should be constant. Next, consumer do not expect any change in the price of the commodity in near future. Consumer also doesn't expect any change in the price level of that product in near future. These are the assumptions, means no change in every factors which are discussed in previous slides. Next, how law of demand should be explained. I just explained this law of demand with the help of demand schedule and demand curve. When the prices is 5, then there should be 100 units of the commodity are buy by the consumer. When the prices decreases, then demand increases by 200 units. When the prices is more decreases, then there should be 300 units by the consumer. That demand is increases. Again prices decreases, again demand increases. Again prices decreases, again demand increases. Now we are explain this schedule in a demand curve. There are two axes. First one, this one is the y-axis and this one is the x-axis. In x-axis we just give the demand and in the y-axis we just give the price. When the prices are 1, there are 600 units buy by the consumer. When the prices are 2, then 400 units are buy by the consumer. When the prices are 3, then there are 300 units buy by the consumer. When their prices are 4, then there are 200 units buy by the consumer. And then prices are 5, then 100 units. We plot all these things in the graph. Then we just draw the demand curve. This is called demand curve. Next, there is explanation of the demand curve. The table shows that when the prices of the, say, orange, for example, we just follow the example of orange. When the prices are 5 per unit, then there are 100 units demanded by the consumer. When the prices fall, demand increases. Similarly, when the price declined to ₹1, then there are 600 units buy by the consumer. It means price decreases, demand increases. It say there is inverse relation. And in this figure, point P of the demand curve DD1 show that demand for 100 units and this. And this is clear from the point QRST that increase in demand of the orange when price fall. All the points which are shown in the previous diagram P, Q, R, S, T. It shows that price increases, demand decreases. Price decreases, demand increases. So now we just are going to explain why more of good is purchased when its price fall. Why this thing happen? ऐसा क्यों होता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज क्यों करते हैं जब प्राइसेस गिरती है? और why does demand curve always slope downward? हमेशा डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड को स्लोप क्यों करता है? इस फॉर्म में स्लोप क्यों करता है? ये हमारा डिमांड कर्व इस फॉर्म में हमेशा क्यों होता है? ये भी हो सकती है शेप उसकी. सो इसके रीजंस क्या है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट गिव एन एग्जांपल दैट देखो, जब हमने पहली बार बर्गर परचेज किया तब हमारा लेवल ऑफ जो सेटिस्फेक्शन था दैट इज़ वेरी हाई. जब हमने दूसरा बर्गर लिया हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया. और जब हमने उसी टाइम तीसरा बर्गर लिया तब हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और भी कम हो गया. इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल utility. Law of diminishing marginal utility says that when we buy more or more commodity of a single product at a less price, but our gravity, our satisfaction level जो है उस चीज़ से वो कम होता जाता है.
एक ही प्रोडक्ट हम बार बार खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, जब जितना हमें पहली बार सेटिस्फेक्शन मिली थी वो ज़रूरी नहीं है दूसरी बार भी हमें उतनी ही सेटिस्फेक्शन उस प्रोडक्ट से मिले। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी वजह से एक टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तो जो मैनेजर होता है, जो कंपनी होती है, वो यही सोचती है चलो हम प्राइसेस बढ़ा देते हैं, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मार्केट में बिक रहा है। बट जब दूसरे टाइम पे क्या होता है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है तो वो उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो प्राइसेस उस प्रोडक्ट की गिरनी शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनकम अफेक्ट। इनकम ऑल्सो अफेक्ट द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। हमारे जो रियल इनकम जो होती है वो उस पर डिपेंड करता है कि प्राइसेस फॉल करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। रियल इनकम जो कंज्यूमर की होती है वो हमारे चेंज इन द प्राइस के ऊपर अफेक्ट डालती है। हम मंथली जो है 10,000 कमाते हैं, उसमें हमने 3,000 अपने एक्सपेंसेस के लिए रखा हुआ है, बाकी अदर हम वी आर यूजिंग फॉर द सेविंग। अब वो 3,000 जो है हम अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज़ करते हैं। अब रियल इनकम सेविंग थोड़ी सी कम करके हमने थोड़ी सी रियल इनकम हमारी बढ़ा दी है, 5,000 कर दी है, तो ऑब्वियसली हमारा जो लेवल ऑफ डिमांड है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इनकम ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स मीन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कमोडिटी फॉर अदर देन व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर। कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, अगर इस जो हमारे प्रोडक्ट का जो सब्स्टिट्यूट है अगर वो सस्ता हो जाए तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, लोग चीपर प्रोडक्ट की तरफ जल्दी मूव कर जाएंगे। तो इस वजह से हमारी डिमांड कम होगी, तो इस वजह से हम अपने प्राइसेस कम कर देंगे। प्राइसेस कम करेंगे तभी हमारी डिमांड फिर से बढ़ेगी। तो सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो अफेक्ट अवर डिमांड। नेक्स्ट, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। If consumer size of the consumer increases, then demand increases. If the size of the consumer decreases, then demand decreases. How many consumer can afford our product is also affect the demand and price of the commodity. Next, different uses. एक प्रोडक्ट के कितने यूजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मिल्क का यूज़ हम कर्ड बनाने के लिए करते हैं, चीज़ बनाने के लिए करते हैं, बटर बनाने के लिए करते हैं। अगर मिल्क की प्राइसेस रिड्यूस करेंगी तो मिल्क का जो यूज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मिल्क की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर मिल्क की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा होंगी तो उसका यूज़ कम हो जाएगा और उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट today's topic and I hope you will understand what is the law of demand. Thank you so much.